Hi guys, welcome back to my YouTube channel DU Scholars. So today we'll be studying about our last unit of business analytics, that is data visualization and analysis part. And 4 units we have completed. Unit 1 में we did theory, unit 2 and 3. Unit 2 was Excel का, and 3 was R, 4 was also R, and 4 तक we did about central tendency at advanced level, where we covered about various measures of central tendency, including weighted mean, moving averages, then harmonic mean, geometric mean, and then moving averages. Maybe did simple moving averages, exponential moving averages, and weighted moving averages. Now we'll be starting about our last unit, that is data visualization part, unit 5. Today we'll be covering about topic of data visualization may will cover topic of line graphs and multiple line graphs. And let's start with the video. So first of all, I hope you are all clear with every unit that I have already taught you, and you're on the same page as I am. And we'll then be starting with that. So subscribe to the channel so that you are not missed out on any video. And if you like this video, you can comment down below, and you can like the video as well, right? So let's start. सबसे पहले data visualization is basically हम डेटा को कोई भी डेटा सेट है जो हमारे पास, उसको हम प्लॉट कैसे करते हैं. So any type of pictorial representation of data is called data visualization. It's very basic, right? So सबसे पहले we'll do the topic of plots. So plots is basically that we all know is the job हम physically we did the plots portion, that was like grid like structure. ग्राफ पेपर हमें दिया जाता था और उस पर हम मार्क करते थे, तो that thing that is created is called plot, right? So हम plot क्या करेंगे, x is equal to 1 and y is equal to let's say 3. ये हमारे डेटा पॉइंट्स है. रन इट and so sorry and why I am written and ऐसे करके press control enter for both of them. एंड एक्स एंड वाई की हमारी वैल्यूज़ क्रिएट हो चुकी हैं, ठीक है. उसके बाद हमने प्लॉट करने के लिए वी यूज़ द फंक्शन नेम्ड एज प्लॉट, where first value is our x value and then the second one is our y value. सबसे पहले we did x की value as 1, so we'll write 1, 3 and see the plot region. Now you can see कि उसने 1, 3 को प्लॉट करके इस that this point represents 1, 3, ठीक है. सो ये बेसिक प्लॉट फंक्शन हो गया, सिंपल एक उसके साथ प्लॉट करने के लिए. नाउ मल्टीपल सेट ऑफ पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं, मल्टीपल सेट ऑफ पॉइंट्स. सो उसके लिए बेसिकली हम जब इकट्ठा सब कुछ लिखते हैं तो वी यूज़ कंकैटिनेट. हम मैं स्टार्टिंग से ही आपको बता रही हूँ. तो सिंपल प्लॉट फंक्शन वी यूज़, एंड उसमें सबसे पहले वी कंकैटिनेट ऑल द पॉइंट्स of x points, and then after putting the comma we concatenate all the y points simultaneously, right? सबसे पहले we put the concatenate sign, and जितने भी x की value want to take you can say 1, 2, 4, 6 and then put a comma ताकि x वाला clear out हो जाए, and then we for the y values we'll put concatenate again and we'll write suggest 3, 5, 6 and 9, ठीक है. सो इसका क्या मतलब हो गया कि प्लॉट कैसे आना चाहिए, 1, 3 का एक पॉइंट आए, 2, 5 का एक पॉइंट आए, 4, 6 का एक पॉइंट आए, 6, 9 का एक पॉइंट आए. तो ऐसे प्लॉट आने के लिए वी यूज़ दिस फंक्शन एंड प्रेस कंट्रोल एंटर. नाउ यू कैन सी हमारे प्लॉट्स बन चुके हैं 2, 5, 4, 6 एंड 6, 9, ठीक है. तो ऐसे बन जाएगा हमारा मल्टीपल सेट ऑफ पॉइंट्स का. उसके बाद भी मूव अबाउट द विजुअलाइजेशन पार्ट, जैसे फॉर्मेटिंग वगैरह ऑफ द प्लॉट. विजुअलाइजेशन ऑफ प्लॉट्स, उसमें देर आर वेरियस फंक्शंस सच एज
हमने जब हेडिंग देनी है, फॉर एग्जांपल यही प्लॉट है, इसका हमने वी हैव टू गिव द हेडिंग्स, तो हेडिंग्स देने के लिए वी यूज़ द नेम फंक्शन और द मेन फंक्शन, राइट, main, एंड देन फॉर द एक्सेस लेवल, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख रहे हो तो इसने कंकैटिनेट और वैल्यूज़ लिख दी है। हम ऐसे तो ग्राफ प्लॉट नहीं करते ना, तो इसके जो हम लेबल्स देते हैं तो वी यूज़ एक्स एक्सिस के लिए वी यूज़ एक्स लैब फंक्शन, एंड फॉर वाई एक्सिस वी यूज़ वाई लैब फंक्शन। कलर्स के लिए वी यूज़ कलर्स COLOURS विद स्टार्टिंग ब्रैकेट। प्लॉट जो बेसिक हमारा जो बैकग्राउंड कलर होगा उसके लिए वी यूज़ दिस फंक्शन, एंड फॉर द डेटा पॉइंट्स के कलर के लिए वी यूज़ COL कलर, डेटा पॉइंट के कलर के लिए COL फंक्शन, ठीक है। और डेटा पॉइंट्स के साइज़ के लिए, मतलब जो आपको ये सर्कल्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे सर्कल्स दिख रहे हैं, इसके साइज़ के लिए, इसका साइज़ इंक्रीज़ करना डिक्रीज़ करना पॉइंट्स के हिसाब से वी यूज़ CEX फंक्शन। देन फॉर द हेडिंग के साइज़ के लिए वी यूज़, जब हेडिंग देंगे तो वी यूज़ CEX डॉट हेडिंग, लेबल्स के लिए CEX डॉट लैब, ऐसे होगा। एंड डेटा पॉइंट्स जो आप ये सर्कल्स देख रहे हो, इसके आप बाय डिफ़ॉल्ट तो ये सर्कल्स होते हैं, बट इफ़ यू वांट टू चेंज द शेप्स तो यू कैन इवन चेंज द शेप्स बाय गिविंग PCH फंक्शन, एंड उसके अंदर भी यू राइट कोड अप टू 25 शेप्स आर देयर विच इंक्लूड सर्कल्स, ट्राइंगल्स प्लस और कोई भी। सो ट्राइंगल्स के लिए आई नो इट्स 2, so for you know, if I want triangles over here, so I will write PCH bracket 2 and then bracket close, and then legends के लिए we use box dot color, तो ऐसे these are all the visualization के functions. Now we'll use these all functions to make a plot simply, right? So let's start. पहले तो I written so much mistakes writing visualization, ठीक है। सो सबसे पहले वी यूज़ द प्लॉट फंक्शन, ताकि बेसिक तो प्लॉट ही है, उसके अंदर वी यूज़ एनीथिंग एल्स। फॉर एग्जांपल हमने 1 to 10 सीक्वेंस का प्लॉट बनाना है, एंड वी राइट मेन एज, मेन का फंक्शन इज़ फॉर हेडिंग, राइट। सो हेडिंग के लिए वी हैव टू यू नो करेक्टर्स हमें चाहिए, तो वी यूज़ डबल कोटेशन मार्क एंड जस्ट राइट माई ग्राफ, कोई भी कुछ भी हेडिंग यू कैन गिव, बट जस्ट रिमाइंड कि आपने इसमें स्पेस नहीं देना है, वो आपको मैंने बेसिक लेक्चर में ही बताया था। देन गिव अ कॉमा एंड राइट एक्स एक्सिस के लेवल एक्स लैब इज इक्वल टू एक्स एक्सिस, एंड फॉर वाई लैब वी राइट वाई लैब इज इक्वल टू वाई एक्सिस, ठीक है। देन फॉर कलर वी गिव COL इज इक्वल टू कोटेशन मार्क में फॉर एग्जांपल रेड, कोटेशन मार्क लगाना मत भूलना वरना रन नहीं होगा। CEX मतलब डेटा पॉइंट्स के हमने हेडिंग साइज देना, लेट्स से 2, एंड PCH 2 ही दे देते हैं, and let's see if it runs. Yeah, now you can see मैंने PCH 2 लिखा तो it gave me triangles. वो ऐसे इसलिए आ रहा है बिकॉज हमने डेटा ही 1 to 10 का लिया, तो उसने उस हिसाब से प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो अगर इसको यू चेंज तो इसमें अलग अलग भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई राइट 6 प्रेस कंट्रोल एंटर, अब क्या बना, इन्वर्टेड ट्राइंगल्स हो गई ना, तो ऐसे है। उसके बाद वी मूव टू आर नेक्स्ट थिंग, जिसमें विल मेक line graph. Next is line graph. इसका you can also practice one question, उसमें भी you can just give any other heading, change the size, change the data point का shape, give different names to the x axis and y axis किसी भी data set के साथ, you can practice that, ठीक है। line graph के लिए there are something two words that we give for giving you know plotting the line graph. सबसे पहले we give type का function we use, and we give L for defining that it is a line graph using the plot function only, and there is something called LWD, that is line width,
that means the line graph that you are drawing, how much width it should hold, so that you are able to see, or you can able to present it well. And third thing is LTY, that is line type. Like example, there are six basically types of line that we use in line function. For example, if we write LTY is equal to 0, then no line will be there. One, if we write 1, then it is for solid line, the straight line as we draw. If we write 2, then it is dashed line, and 3 is for dotted line, and so on, 4, 5, 6. You can even check and comment down क्या क्या होता है. You can just write it, right? तो सबसे पहले we make a plot का function फिर से, and give the same data, and write type is equal to inverted commas L, small l, ठीक है. And then give the color as, let's say, black. बेसिक कलर्स भी यूज़, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. देन वी गिव लाइन विड्थ LWD इज इक्वल टू 2, एंड देन LTY, let's keep it as a dotted line 3, and just run the function. Now you can see it has created a black dotted line with given as the points, and line graph is ready. ऐसे you can even use for other given data sets also. I have data set import कैसे करना है, use कैसे करना है, I've taught you in the recent videos, right? Now let's move to the next topic, that is the multiple line graphs. Multiple line graphs कैसे बनते हैं, that is more useful, right? So इसके लिए भी first of all we'll create a vector named line1, where we'll put some values as concatenate, and just put 1, 2, 3, 4, 5, run it. And line 2, other vector, create concatenate 2, 5, 7, 3, 6, ठीक है. Press Control Enter. Two vectors are created. Now we'll plot this two line datas into multiple line graphs into single plot. So सबसे पहले we use the plot का function, and just give the reference where we were writing 1 to 10. Just give the reference of the vector as line1, give the type as L, and give the color as, let's say, pink, and just run it. Now you can see यहाँ पर straight line is created. पिंक है तो आपको थोड़ा लाइट दिख रहा होगा, इसका आप width बढ़ा देंगे तो आपको दिख जाएगा. Write LWD is equal to 3, then run it. Now you can see थोड़ा दिख रहा है ना आपको लाइन कैसे क्रिएट हुई है. अब क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 था, इसीलिए स्ट्रेट लाइन क्रिएट हुई है. If we use the other data set, plot, give line 2 का reference, write type is equal to L, give color as, let's say, green, and give the length width as 3, run it. Now you can see the data उसने कैसे बना दिया, ठीक है. Also इसके साथ you can also use the function named as lines, lines function के साथ भी you can do the same thing. Let's plot for line 2 only. Give the type, it's same, there is no change. Give the color blue, length width 3, run it. Now you can see same उसने प्लॉट चेंज कर दिया, जस्ट हमने कलर चेंज किया, और लाइंस और प्लॉट्स दोनों के साथ उसने बना दिया, ठीक है. अब आई एम गिविंग यू अ होमवर्क. यहीं पर create a plot, the line graph for data set of first data set is, create a vector. First data set is 4, 6, 9, 8, 2, and second data set is 8, 6, 2, 4, 3. Create the vectors, use plot function as well as lines function
to plot the line graph, and that's comment down below आपको अगर आ गया हो, and if you like this video and you understood everything, you must click the like button, hit the subscribe button, and I'll meet you in the next one, and share it with your friends ताकि सबका भला हो. Thank you so much.